Today I will give you a brief idea of calculus. Calculus has three major topics: limits, derivatives, integration. And the pillar of calculus, there are three pillars of calculus which will keep you fit. F is formulae of limits, derivatives and integration. I, the identities. 5 major identities are there on a plus b, 2 theta, 3 theta, pi by 2 pi and factorization. T, treatment according to the type of the problem. Limits have 4 major treatments, derivatives 8 and integration have 12 treatments. So in all 24, that is 2 dozen treatments are done, your calculus is over. So is the first point clear? Pillars of calculus: formulae, identities, treatments. That was my first point. Now I said here treatment according to the type of the function. So let's understand what do we mean by function. But in simple terms, function is the equation between independent variable x and dependent variable y. Suppose a driver is moving with the speed of 30 km per hour. Let's take two variables, x as time and y is the distance traveled. So I said 30 km per hour, velocity is 30 km per hour. So here in 1 hour he will travel 30. In 2 hours how much? Yes, 60. In 3 hours 90. So I told you the distance, I told you the value of time and you told me the distance. So distance is the dependent variable, time is the independent variable, which can be written in the form of the equation as y is equal to 30x. So you understood what is function? It is the equation between independent variable x and dependent variable y, and function can be written as f of x. Now the set of values of x is called as domain. The set of values of y is called as codomain or range. Range is the subset of codomain. Codomain में at least एक element extra हो सकता है, but range has got the exact replica. 1 का 30, 2 का 60, 3 का 90. So these are the images. तो ये हो गया आपका रेंज, और यहाँ मैंने एक्स्ट्रा एलिमेंट लिख दिया सपोज 100, तो उसको हम लोग कोडोमेन भी बोल सकते हैं. सो आई रिपीट, range is the subset of codomain. So that is my second point, function. Third point is the type of the function, which is there are 5 major types of the functions. Third point, types of the functions. LIATE. E मतलब exponential function. T is the trigonometric function. A algebraic function. I inverse. And L मतलब logarithmic function. Logarithmic function. एक्सपोनेंशियल का एग्जांपल दे दूं, y is equal to 2 raised to x. x या y सर के ऊपर जाके बैठा तो that is called as exponential function. Trigonometric, sin, cos, tan, sec, cosec, cot का कौन सा भी टर्म अगर इक्वेशन में आ गया तो trigonometric function. Algebraic में there are 3 types: constant, linear
non-linear. If I take the value of y as 60, so it does not depend on the value of x, constant function. अगर x and y की डिग्री 1 है तो that is called as linear function. 2 या 2 से ज्यादा है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर फंक्शन, है ना. यहाँ डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 या 2 से ज्यादा है, सपोज x स्क्वायर का टर्म है, तो ये हो गई आपका नॉन लीनियर फंक्शन. सो दैट्स माय थर्ड पॉइंट, टाइप ऑफ द फंक्शन. बच्चों, ट्रीटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द फंक्शन. लिमिट्स में देखना है आपको, भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग है, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो उसकी, तो ट्रीटमेंट इज टाइप ऑफ द फंक्शन इज द मेजर पार्ट ऑफ द कैलकुलस. इज द थर्ड पॉइंट क्लियर? नाउ फोर्थ पॉइंट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फंक्शन. बच्चों, मैंने कहा कि भाई फंक्शन इज द इक्वेशन, तो व्हेन आई से एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस के ऊपर आपका एरिया डिपेंडेंट रहता है. तो रेडियस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एरिया इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब जो जो फॉर्मूले आप सीखते हो वो फंक्शन ही है. इक्वेशन मतलब फंक्शन. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, तो रेडियस हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वॉल्यूम हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल. वेरियस अदर एग्जांपल्स ऑफ द फंक्शंस, ये बेसिक फंक्शंस है. जैसे मैंने कहा कॉस्ट फंक्शन, तो इन द इंडस्ट्री कॉस्ट डिपेंड्स ऑन आउटपुट. जैसे आउटपुट बढ़ते जाएगा वैसे कॉस्ट बढ़ते जाएगी, तो दैट इज द कॉस्ट फंक्शन. डिमांड फंक्शन, डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, तो दैट इज द डिमांड फंक्शन. इक्वेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज द डिमांड फंक्शन. रेवेन्यू, पैसा किसके ऊपर डिपेंड रहता है? डिमांड के ऊपर. तो इक्वेशन बिटवीन रेवेन्यू एंड डिमांड इज कॉल्ड एज द रेवेन्यू फंक्शन. Is it clear to you? So these are the various types of applications of the functions. In the next lecture, we'll see how to take the limits of the function. Various 4 treatments we are discussing. So this my lecture, first lecture was on the introduction to calculus. Thank you. God bless.